व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया के सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम एक पिक्चर लेंगे, इस पिक्चर के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही एक वीडियो पहले बना चुके हैं, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। और बाकी दूसरी वीडियोस देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारी आज की पिक्चर। इसके अंदर एक फ्रीडम फाइटर लिए गए हैं और जो फ्रीडम फाइटर है वो सराउंडेड है बाय डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स। फ्रीडम फाइटर इज सराउंडेड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स। तो उसके ऊपर बेस्ड MCQs we are going to discuss in this video. Our first question is, nationalism spreads when people, options are, believe that they all are part of same nation, or they feel some unity among them, or they feel collective belonging, or all of the above. Answer is all of the above. Nationalism spreads when people believe that they all are part of same nation, as well as they feel some unity among them. When they feel brotherhoodness, then only nationalism arises. And when collective belongingness, feeling of collective belongingness come, then so all the three options are right options. Next question is, who's shown in the given picture? ये जो पिक्चर है ये किसकी है? Who is shown in the picture? ऑप्शन आर बाल गंगाधर तिलक और लाल बहादुर शास्त्री और रविंद्रनाथ टैगोर और चंद्रशेखर आजाद। Answer is बाल गंगाधर तिलक. Here in this picture, the freedom fighter is बाल गंगाधर तिलक. Next question is, the person shown in picture is surrounded by symbols of, options are, unity or history or god and goddesses or culture. Answer is unity. The leader surrounded by the symbols, and the symbols are shown unity. Here in this picture, symbols are the mosque and of temple and gurudwara and church, as well as Hindu god and goddesses. So the entire picture shows some unity, under which all the people of entire country live together. So the picture shows, the symbol shows unity. Next question is, the sense of collective belonging and nationalism arose. Options are united struggles or folklore, songs and symbols, or both one and two, or none. Answer is both one and two. Here again, united struggles, folklore, songs and symbols, all these things create a feeling of nationalism among people, among the citizens of the country. So both options are right options. That is all for today. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए